अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी हिंदुस्तान के मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है, और जहाँ भी कहीं हिंदी और मराठी बोली जाती है, मेरी लैंग्वेज को समझा जाता है, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल एंड मोर, तो इस चैनल को ज़रा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अभी 2025 में ये चैनल चालू किया हूँ, और इसमें मैं अफ्रीका ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और मैं अभी अफ्रीका में हाल फिलहाल 2 साल से मैं अफ्रीका में जॉब कर रहा हूँ। तो साथों साथ यहाँ के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मंजर है। तो मैं सोचा कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को, और जो भी जहाँ पर भी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, वो सभी लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, जहाँ भी कहीं हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं पूरी दुनिया में। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अफ्रीका की जो है खूबसूरत जो खुदा की नज़ारे है, उसका नज़ारा लीजिए। अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं इधर आने के बाद एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस आया। यहाँ का खाना बोलो, यहाँ का रहने का तरीका बोलो, और यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बोलो, और यहाँ पर लोग मतलब कुछ अलग ही है। मतलब अपने इंडिया से कोई चीज़ें तो ऐसी है कि जो यहाँ पर देखने मिली वहाँ तो देखने नहीं मिली। और लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार की ज़रूरत है, इसलिए जो है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है जो ऊँट कारागिरी पे है। मतलब ऊँट की जो कारागिरी करते हैं हाथ से, तो अफ्रीका के लोग बहुत अमेजिंग काम करते हैं, वो बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं उन लोगों की हैंडमेड चीज़ें। तो इसलिए मैंने आपको जो है ये छोटा सा का एक मेरा जो वीडियो आ, उससे पहले मैंने बोला कि चैनल को जो है ग्रो करना है। मेरा नाम सैयद नजीब पीरज़ादा मेरा नाम है, और मैं महाराष्ट्रियन से हूँ, मुंबई से हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मेरा नेटिव पैलेस जो है वो संगम है, महाराष्ट्र नासिक के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, और जो है जैसे कि अभी डिजिटल दुनिया वापस डिजिटल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, तो हमने भी इसमें अपना कदम रखा है। देखते हैं आप लोग, आप जितना प्यार मिलेगा, जितना प्यार आप दिखाएंगे, हम उतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये कंटेंट बनाना और इसके ऊपर से जितने भी लोग यूट्यूब ब्लॉगर है, वो आसानी से नहीं करते, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। और इसमें जब मैं आया तो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि मेहनत का काम है, लेकिन आप लोगों की एक लाइक से और एक बेल आइकन बटन दबाने से हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता। मेरा उद्देश्य पैसे कमाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर पैसे आएंगे तो किसको बुरे नहीं लगते। लेकिन फिलहाल तो मैं अफ्रीका में जब तक हूँ, और इसके अलावा भी अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जहाँ भी मुझे भेजा, तो मैं वहाँ के भी ब्लॉग कंटिन्यू बनाऊंगा। क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो हिसाब से मैंने जो है ये छोटा सा अपने बारे में, मतलब इससे पहले वाले इसमें भी बताया था मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल थोड़ा वाला बोलेंगे अपन। और अपनी जो है यूट्यूब फैमिली वालों जो भी अपने साथ जुड़ेंगे, यूट्यूब फैमिली वाले जो भी बनेंगे, जो ऑनलाइन फैमिली है, उनके साथ हमारा जो भी बात है उन तक पहुँचनी चाहिए। तो मेरा अफ्रीका का जो है मेन, मेरा जो है वो फिलहाल जो है पॉइंट है कि अफ्रीका को मैं जो है इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, अफ्रीका के बारे में मालूमात जो हिंदुस्तान तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। तो फिर से मैं अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको एटलीस्ट थोड़ा देखो, उसको एंड तक देखो। हो सकता है थोड़े बोरिंग होंगे, लोगों को दिल नहीं लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की। क्योंकि प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे और अच्छे ब्लॉग बनेंगे। इंडिया में जल्दी आने वाला हूँ, जब भी मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं इंडिया आऊँगा। तो इंडिया में भी मेरे जो पॉइंट है वहाँ के ब्लॉग्स में डालने वाला हूँ। मेरे फैमिली वगैरह भी इंतजार करेगी। आप सबका ढेर सारा प्यार चाहिए मेरे को, ताकि मैं जो है नेक्स्ट और भी ब्लॉग इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब ये जो सोशल मीडिया का एक ऐसा मामला है कि अगर लाइक आए, कमेंट आए, तो आदमी को इंटरेस्ट आता है, फिर अपना टाइम डालता है इसमें। तो बस आपका प्यार चाहिए, और मेरे यूट्यूब चॅनल का हिस्सा बनिए। और मी महाराष्ट्रीयनच आहे, तो मी थोडा मराठीमध्ये पण सांगणार की जेवढे माझे महाराष्ट्रीयनचे लोक आहेत, तेवढे माझे बहिणी बांधव जेवढे लोक आहेत, त्या सगळ्यांना मी एक रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही माझ्या चॅनलवर सबस्क्राईबचं बटन दाबवा आणि लाईक करा, आणि पूर्ण व्हिडिओ आणि तुमचा ढेर सारा मला ते सपोर्ट पाहिजे, ते तुम्ही करा। जय महाराष्ट्र।
jewelries and something, yeah, artificial, the ladies item. So I like your surprise. Show me. Wow. Hey, it's very beautiful. Oh. Oh, what the time for when you started for this, making the time? I mean, they started to the finishing. Okay, initially I did not come it myself, but the mind is to create it. Okay. So you doing this one? Yes, I do this one. Wow, This wow. one. Hey, it's very beautiful. Wow, Yeah. It's amazing. Yeah. You know that Of course. it's my country, India. They also this type of working laborers plenty, but the past, the few. That was the Old structure like this, but it's Ghana traditionally the African style. Yeah, this one is African. Oh. What the price for this one? If I complete everything, it's 1,000 cities. 1,000 cities. Okay. If I was able to complete everything. But it's maybe 1,000 cities very small, reasonable price. Oh. This price. No, because of this one is not normal, no, my brothers. Oh wow. I think a small shop. I have a YouTube channel. If you don't mind, I post play this video. Yeah, what's your name? Daniel. Daniel. Nice to meet you. Dotun David Popoola is more than a sculptor. He's an alchemist of metal, a Nigerian-born artist. He transforms discarded scrap into hyper-realistic sculptures, turning what others see as waste into breathtaking masterpieces. His style is bold, dynamic, and deeply rooted in sustainability. Every sculpture is a fusion of intricate craftsmanship and environmental consciousness, proving that art can be both visually stunning and impactful. His lifelike animals and human figures carry a sense of motion and emotion, making metal feel almost alive. Popoola's work challenges how we view discarded materials. It's not just about recycling, it's about reimagining. His ability to merge fine details with rugged textures creates a striking contrast, capturing the essence of his subjects in ways that leave viewers in awe. So, is it just metal, or is it a second chance at life? Dotun Popoola proves that art isn't just what we create, it's how we see the world. What do you see?